एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हम प्रेशर का यूनिट हमने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया हुआ था, तो it would be 5.2 atmospheric pressure. Otherwise, as a point to note, atmospheric pressure is equal to 10 raised to the power 5 pascals. ठीक है. अच्छा, let's give you another question. Jamboard share. Jamboard share. ठीक है. नाम हमारा टीचर. Certain quantity. Atmospheric pressure reaches 10 raised to the power 5 pascals. This gas has a volume of 30 cm cube. What would be its volume at ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है? जी. इसमें टेम्परेचर नहीं होगा? मैम टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. टेम्परेचर इज कांस्टेंट.
Sir, volume should be in meter cubes or centimeter cubes? मैम अगर सेंटीमीटर क्यूब्स में दिया हुआ है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं एंड द आंसर वुड बी इन सीएम क्यूब्स देन. Okay. I thought 15 centimeter cube and 6 centimeter cube. अच्छा जी, हाँ जी, योर आंसर इज करेक्ट, लेकिन देयर ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हमारे पास ये होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है. अगर हमारे पास प्रेशर जो है इट वाज इनिशियली 1 into 10⁵ व्हेन इट डबल्स द वॉल्यूम वुड हाफ, ठीक है. एंड सेकेंडली इन द सेकेंड पार्ट व्हेन इट बिकम्स 5 times द वॉल्यूम वुड बिकम 1/5. अगर आप इस तरह भी देखें कि व्हेन द प्रेशर डबल्ड योर आंसर वुड हैव कम आउट टू बी 15 cm cube which is half of the original volume, and when it becomes 5 times the volume became 1/5 of what it was originally, that is 6 cm cube. ठीक है जी. अच्छा, this then okay, let's move on to the next thing. The next thing that we have got is largely a theoretical topic. हमारे पास expansion of solids, liquids and gases हैं. अच्छा, we know that matter when heated it expands and when its temperature drops it contracts. ठीक है जी. This phenomena is used around us for a number of things. So for example, when we have got different metals, in which in case for example if we have to fix one metal tightly into another, for example हमारे पास ये जो गाड़ियों के इंजन बनते हैं उसमें कई parts होते हैं. There is this part and in between this part I have to fix another thing, ठीक है. But the thing that I have to fix it solidly, ठीक है जी. तो मैं क्या करता हूँ, this item I cool it so it shrinks and then I put it in this second and then let it come back to its original temperature, and when it comes back to its original temperature it again expands and then it gets fixed in the second thing. ठीक है जी. Similarly आपने नोटिस किया होगा, I don't know if you have or not before, जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है, have you ever had a railway ride before? रेलवे में कभी आपने ट्रैवल किया? Yeah, but I was there as well. ठीक है जी. अच्छा जी, हमारा रेल कार में किस तरह होता है जी कि जो ट्रैक होता है, इस ट्रैक में जो पीसेस जुड़े हुए होते हैं उनके दरमियान गैप होता है. जो दोनों साइड में मेटल है, that gap is left so that and in summers the temperature rises, the metal it expands and fills this gap. ठीक है. अच्छा, I don't know if you have been to हरम or not. मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी, मक्का या मदीना गई हुई हैं? वहां पे अगर आप नोटिस करें उन्होंने सहन में बड़ी बड़ी टाइल्स लगाई हुई हैं
and in between those tiles there is some rubber filling, and then the next tile. That rubber filling is left there so that when tiles in summers they expand, so the rubber would contract and the tiles they still remain intact. ठीक है, अगर ये हम गैप ना छोड़ें, so for example in case of railway track, if you do not leave this track, ये मुड़ जाएगा, ये जब वो मेटल एक्सपेंड होना शुरू होगा टूट जाएगा, ये ऐसे दोनों साइड से जब ये ऊपर आना शुरू होगा तो बोथ साइड्स इट, because obviously we haven't got such a long metal bar which would go from one city to the next, so it's a joint, or it's, let's say, different metal bars they are put together. So the thing is that we have to leave the gap in between them. If we do not leave the gap, both metal bars they'll expand and they'll collide with each other and eventually they'll move upwards, which would obviously damage the track or accidents होंगे. Similarly ये tiles जो हैं इनके दरमियान में अगर हम ये insulation या दरमियान में कोई वो rubber fixing ना रखें तो they'd expand and eventually they'll crack, उनमें cracks आ जाएंगे, वो टूट जाएंगी. अच्छा, this is something जो which is sort of done as a precautionary measure. हम प्रोएक्टिवली भी कुछ डिवाइसेस में यूज करते हैं. देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप. बायोमेटालिक स्ट्रिप्स क्या होती हैं कि इफ यू हैव गॉट वन मेटल एंड यू लेट इट, यू हीट इट अप, इट विल एक्सपेंड. ठीक है जी, बट इफ यू पुट टू different metals, we know for different metals they have got different temperatures which would be required to heat them up or to make them increase their size. So for example, we put a copper strip over here and an iron one over here. Okay, and now when we heat these two together, instead of expanding vertically, they sort of bend like this. ठीक है जी, और उसकी वजह से क्या होता है, this phenomena, these bimetallic strips, they are used in all temperature control devices. So for example, हमारा जो कपड़े इस्त्री करते हैं, आयरन जो हम यूज करते हैं, उसमें जो थर्मोस्टेट यूज हो रहा होता है, जितनी भी डिवाइसेस में थर्मोस्टेट यूज हो रहा है, थर्मोस्टेट किस तरह से होता है, यू हैव टू रेज द टेम्परेचर अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड देन यू वांट टू ब्रेक द कनेक्शन एंड यू, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी से आपकी आयरन हीट हो रही है. ठीक है, तो आफ्टर इट रीचेज, आपने जो थर्मोस्टेट उसका सेट किया है, आफ्टर इट रीचेज अ सर्टेन टेम्परेचर, you want the connection to break down and you do not want it to provide further electricity to be converted into heat. ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअसली हीट होती जाए तो डेफिनेटली आपके कपड़े जल जाएंगे, इस्त्री में भी आग लग जाएगी. अच्छा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रोकने के लिए फिर क्या होता है, देन वी यूज बायोमेटालिक स्ट्रिप्स. और इसमें वी हैव कॉन्फ़िगर्ड, एग्जैक्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, बट द थिंग इज के एक सर्टेन टेम्परेचर तक हमने इनको इक्विप किया हुआ होता है कि एज इट रीचेस अ सर्टेन टेम्परेचर, बाय दैट टाइम this metallic strip, it would bend a bit and it would break the circuit. So for example, here is the circuit, यहाँ पे ये दूसरा एंड है सर्किट का, या एक कनेक्शन यहाँ से आ रहा है, लेट्स से पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है और नेगेटिव यहाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्चुअली इट्स डिफरेंट. तो जैसे ही ये सर्टेन टेम्परेचर रीच करेंगी, it would bend and the connection would break and it would not heat any further. Then it would cool down and it will come back to its original position जो स्ट्रेट की थी, और वो कनेक्शन जब वापस हो जाएगा, अगेन इलेक्ट्रिसिटी वुड पास एंड द हीट वुड बी प्रोवाइडेड. ठीक है, इसी तरह से इट कुड बी कि अगर मैंने किसी चीज को कूल करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा, व्हेन इट्स हीटेड it would be connected and as soon as it's cooled a certain temperature is reached, it would straighten out और ये इससे पीछे हो जाएगी and the connection would break. जितने भी हमारे थर्मोस्टेट डिवाइसेस होती हैं, फायर अलार्म्स होते हैं, उसमें हमारी ये बायोमेटालिक स्ट्रिप्स यूज होती हैं. अच्छा, सिमिलरली हम जो ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिज में यू नो अ लॉट ऑफ मेटल इज यूज्ड एंड दूसरे भी जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वी हैव टू प्रोवाइड फॉर द फैक्ट दैट दीज मेटल्स दे वुड एक्सपेंड, और उसकी जितनी एक्सपेंशन है वी गिव रूम फॉर दैट एक्सपेंशन, अदरवाइज ब्रिजेस वुड कोलैप्स. अगर हम वो एक्सपेंशन के लिए रूम ना छोड़ें ब्रिजेस या जो भी हम अपना कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो द स्ट्रक्चर्स वुड ब्रेक डाउन. अच्छा, ठीक है. अच्छा, गैसेस के केस में हमारी एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. गैसेस में ऑलरेडी हमारी फोर्सेस जो हैं उनके दरमियान में वो वीक होती हैं, तो इट्स इजी टू एक्सपेंड गैसेस. वाटर के केस में, लिक्विड्स के केस में, वाटर हैज गॉट अ स्पेशल केस.
वाटर के केस में क्या होता है, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू cool any particular material, it shrinks. For water it's slightly different. पानी के केस में क्या होता है, when you reduce the temperature of water, let's say up to 4 degrees centigrade, it contracts 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तब तक इसका वॉल्यूम जो है वो श्रिंक होता है एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स। होना ये चाहिए theoretically कि when I reduce it further beyond 4 degrees, I mean further below 4 degrees centigrade, it should contract further, but water it actually expands। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री तक जब मैं लेके जाता हूँ, इवन आई थिंक -4 डिग्री तक it expands, and then further below -4 it again contracts। So this strange phenomena in water where it expands in between when the temperature is dropping from 4 degrees centigrade to -4 degrees centigrade, this is called anomalous expansion of water। आपने पानी में अगर ये घर में फ्रीजर्स में हम कई दफा वो यूज करते हैं, वो कटोरे में वो पानी रख के बर्फ जमाते हैं, आप कभी बर्फ का सरफेस देखिएगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग श्रंक इनवर्ड्स उस पे ऊपर की तरफ एक बल्ज आया हुआ होता है। ठीक है, दिस इज द रीजन दैट व्हेन इट रीचेस दैट फ्रीजिंग टेम्परेचर, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट एक्सपेंड्स। अच्छा जी, सो दिस इज फॉर एक्सपेंशन। ठीक है जी, ठीक है। क्विकली नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है इट इज विद रिगार्ड्स टू थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स का हमें पता है जी कि थर्मोमीटर्स आर द डिवाइसेस व्हिच वी यूज टू कैलकुलेट टेम्परेचर। अच्छा, जो यूजुअली हम थर्मोमीटर्स पे क्या यूज कर रहे होते हैं जी, हमारे पास 2-3 हैं स्केल्स। वी यूज डिग्रीज सेंटीग्रेड, वी यूज डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड वी यूज केल्विन। आपने थर्मोमीटर्स और ये लेट्स से एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये टॉपिक्स स्कूल में किए हुए जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चीजें? नहीं किए हुए, ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट श्योर वेदर दिस कन्वर्जन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज पार्ट ऑफ योर कोर्स। आई जस्ट गिव यू द फॉर्मूला। So if you want to convert from degrees centigrade to degree Fahrenheit, you take the temperature in centigrade, multiply it with 1.8 and you add 32 to it। ठीक है, तो you'd get your answer in Fahrenheit। Similarly, if you have got in Fahrenheit and you want to convert it to degrees centigrade, so you'll have to do the reverse of it। आपका जो भी टेम्परेचर है उसमें से आप 32 माइनस कर देंगे and you divide it with 1.8। These are the conversions, but I'm not sure whether these are part of your syllabus or not। Centigrade to Kelvin easy है, centigrade में 273 ऐड कर दें तो you'll get temperature in Kelvin। ठीक है, एक सेकेंड ऐड करेंगे, लेस करेंगे हम, C minus 273। so for example, हाँ ऐड करेंगे, ठीक है। Kelvin is equal to C plus 273। अच्छा, this then thermometers हमें पता है, thermometers are the devices that we use to measure temperature। thermometer usually जो हम use कर रहे होते हैं, we are using we have got a glass casing। ठीक है जी, इस ग्लास केसिंग के एक एंड पे स्ट्रिप होती है, इसके अंदर एक हमारे पास इन ग्लास ट्यूब होती है। देयर इज सर्टेन लिक्विड फिल्ड इन इट। यूजुअली वी यूज विच टू लिक्विड्स? कौन से लिक्विड्स हम यूज करते हैं? मरकरी और अल्कोहल। ठीक है जी, अच्छा जी। अच्छा, मरकरी जो है, मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 357 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वी कैन यूज अ मरकरी थर्मोमीटर टू कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू रेंजेस। इससे कम अगर हम वो करेंगे तो मरकरी वुड स्टार्ट evaporating, sorry it would freeze, फर्दर मूव नहीं करेगा, टेम्परेचर रीडिंग हमें सही नहीं देगा। उससे ज़्यादा करेंगे तो मरकरी वुड स्टार्ट बॉइलिंग, अगेन हमें सही रीडिंग नहीं देगा। फॉर अल्कोहल इट्स -115 डिग्री सेंटीग्रेड
for freezing, and 78 degrees centigrade for its boiling temperature. So again, alcohol looks like it's more suitable to use alcohol for as a material within your thermometer for low temperatures. अगर आपने freezing वाले end पे कोई experiments करना है तो maybe you should use an alcohol thermometer. बॉइलिंग एंड पे ज़्यादा टेम्परेचर के लिए यूज़ करना है तो मे बी यू शुड यूज़ अ मर्करी. अल्कोहल के टेम्परेचर में सॉरी थर्मोमीटर में एक और डिफरेंस होता है, इट चेंजेस रीडिंग्स वेरी क्विकली. ठीक है, यूजुअली हम लैब में अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो अल्कोहल वाले थर्मोमीटर्स यूज़ कर रहे होते हैं. अच्छा जी, अच्छा जी. अदर देन दैट वी हैव गॉट डिजिटल थर्मोमीटर्स एज वेल. इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं. Maybe you have seen those thermometers with any doctor if you have visited any recently. वो सेल को यूज करके, उसमें कोई भी लिक्विड यूज नहीं होता. ठीक है जी, ठीक है. थर्मोमीटर्स जो है वो सिंपली आपका एक प्रिंसिपल यूज कर रहे होते हैं कि हीट पासेस फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू द वन ऑफ एट लोअर टेम्परेचर. हीट का हमें ये पता है कि फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई हीट इट वुड ट्रेवल टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ लोअर हीट. तो किसी भी बॉडी में ज़्यादा हीट होती है, थर्मोमीटर में कम हीट होती है, तो वो हीट गेन करके दे आर डिजाइंड इन सच अ वे कि इसमें जो स्केल्स होते हैं दे आर गिवन अकॉर्डिंगली के डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल व्हिच व्हाट इज इन देयर इन द थर्मोमीटर के कितना मैक्सिमम वो एक्सपेंड करेगा कितनी हीट आने पे, एंड दैट गिव्स अस द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर. ठीक है. After this we have got the topic of specific heat capacity. Any idea what is specific heat capacity? अच्छा जी, specific heat capacity of a substance is the amount of heat energy required to produce a 1 degree centigrade rise, to raise temperature required to raise temperature by 1 degree centigrade of any substance of 1 kg of any substance. ठीक है जी. So if I've got 1 kg of different substances, there would be different amount of heat required to raise the temperature of that particular substance by 1 degree centigrade. ठीक है. आयरन के लिए और होगा, कॉपर के लिए और होगा, एल्यूमिनियम के लिए डिफरेंट होगा, स्टील के लिए डिफरेंट होगा, ब्रॉन्ज के लिए डिफरेंट होगा, निकल के लिए डिफरेंट होगा. अच्छा, दिस स्पेसिफिक हीट इट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स. The amount of heat that we require to raise temperature of anything, any substance is dependent on 3 things. क्या आपने लिख लिया था पिछला जो मैंने लिखा था सर? जी. ठीक है. So the amount of the heat energy required to raise temperature of any substance is dependent on 3 things. Number 1, mass of the object. Obviously, the more the mass, the more heat energy would be required for same material. The more the mass, the more the heat energy required to raise its temperature. Mass of the substance.
ठीक है. Number 2, it would be temperature rise. By how much amount do you wish to raise the temperature of anything? And the third would be the specific heat capacity. Specific heat capacity. अच्छा जी, specific heat capacity हमारी मेजर होती है how much joules we require per kg per degree centigrade. ठीक है, because we have to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree centigrade, and this is the amount of energy required. So specific heat capacity has a unit of joules per kg per degree centigrade. अच्छा, if I give you a small question, let's say we have got, ये लिख लिया आपने सारा? जी. ठीक है, we have got 5 kg of a material. अच्छा, सॉरी, मैंने इसका फॉर्मूला आपको नहीं लिखवाया था. इट्स फॉर्मूला इज Q, which is heat energy required is equal to mass times C, specific heat capacity, times डेल्टा T, और कई दफा डेल्टा T लिख लें या बेशक डेल्टा थीटा लिख लें. Both are used to denote change in temperature. So mass times specific heat capacity times change in temperature. That is the amount of heat energy required. Acha, if we have 5 kg of a substance, and we want to raise its temperature from 15 degrees centigrade to 25 degrees centigrade, let's say. Okay, and the substance has got a heat capacity of 400 joules per kilogram per degree centigrade. So what's the amount of heat energy required? Sir, आज हम लोगों को class 12:45 तक रखनी पड़ेगी क्योंकि हमने. Okay, no problem. Sir, is the answer 20,000 joules? The answer is 20,000 joules. ठीक है जी. The next thing that we have got is thermal capacity. Heat capacity was for 1 kg of a substance.
thermal capacity is for whatever mass of the substance, so it's defined as thermal capacity of a body is the quantity of heat needed to raise raise the temperature, raise the temperature of the whole body by 1 degree centigrade. Okay. ठीक है जी, अगेन हम अपना सेम अगर फॉर्मूला यूज करें Q इज इक्वल टू M टाइम्स C टाइम्स डेल्टा T, ठीक है जी। तो डेल्टा T इज 1, C इज हीट कैपेसिटी टाइम्स मास, तो it becomes thermal capacity is mass times specific heat. Thermal capacity thermal capacity is equals to mass times specific heat. Acha, what's the use of this concept of specific heat? One application in front of us is कि लेट्स से पानी जो है, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 4200 joules per kg per degree centigrade, ठीक है। तो इफ यू वांट टू रेज वन temperature of 1 kg of water by 1 degree centigrade, you have to give 4200 joules of heat. Soil, उसकी हीट जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज 800 joules per kg per degree centigrade, ठीक है। इसी वजह से जब हम बीच पे जाते हैं तो जो रेत आपके बीच पे होती है दैट इज यूजुअली वार्म, बट एज सून एज यू स्टेप इनटू वाटर इट्स कोल्ड, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर एक चीज और भी है कि द मोर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 degree centigrade, similarly when that body cools down or loses its temperature by 1 degree centigrade, it would give off an equal amount of energy, ठीक है। तो जिस तरह उसको टेम्परेचर रेज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसी तरह जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा देन आल्सो इट वुड गिव गुड इनफ अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, गुड 5 मिनट्स, ऐसा करते हैं छोटा सा एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं। I've got a copper block of mass 0.1 kg. अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, आई थिंक यू मस्ट हैव एन आइडिया, इट्स द specific, when I'm talking about specific heat capacity, it's for a particular substance. So no matter what the mass of the substance is or how much or less of a substance, the specific heat capacity stays the same, ठीक है। तो for example it would be fixed for copper, whatever mass of copper उसके लिए वो fixed होगी, similarly aluminium, iron, whatever। अच्छा जी, copper block of mass 0.1 kg and specific heat capacity इसकी है is 390 joules per kg per degree centigrade. So if I want to raise the temperature of this particular block by 1 degree centigrade, how much heat do I have to give it? Okay.
Is the answer 39 joules? जी, the answer is 39 joules. अच्छा, the next few questions would take some time. आज हम यहीं तक रख लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इसी के क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। चलें जी, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।